Okay, let's start. Yesterday, we already gone through the what is meant by CRM and what are the different objects which are belonging to the CRM. So, what is basically CRM? CRM is nothing but the customer relationship management, which consists of these three major clouds and the application. जिसमें हमने देखा था marketing, sales and service. सो मार्केटिंग क्लाउड होगा जिसके अंदर मार्केटिंग एप्लीकेशंस होगा, सेल्स क्लाउड होगा जिसके अंदर सेल्स एप्लीकेशन होगा, और सर्विस क्लाउड होगा जिसके अंदर सर्विस एप्लीकेशन होगा. And this application is associated with various tabs, and we know that each tab is always associated with the each or each tab is always associated with a single object. So we need to understand all those objects. तो उसमें से हमने पहले 5 प्राइमरी ऑब्जेक्ट्स के बारे में डिस्कस किया, वेयर वी टॉक अबाउट कैंपेन, लीड, अकाउंट, कॉन्टैक्ट एंड अपॉर्चुनिटी. और एक सिनेरियो हम लोगों ने कंसीडर किया कि बीइंग एन ओनर ऑफ अ सैमसंग कंपनी, वी आर रनिंग आवर बिजनेस ऑन दिस Salesforce CRM, and we use this campaign, lead, account, contact and opportunity object for our business purpose. तो सैमसंग ने सबसे पहले क्या करेगा, सैमसंग सैमसंग इज गोइंग टू शो हिज एग्जिस्टेंस. तो उसको एग्जिस्टेंस शो करने के लिए सबसे पहले कैंपेन्स रन करने पड़ेंगे, मार्केटिंग करना पड़ेगा. एंड to do the marketing we need some procedure, and that procedure is defined into this CRM. तो हमने कैंपेनिंग रन किए थे कल, एक टीवी एडवर्टाइजमेंट दिया था और एक होर्डिंग का कैंपेन रन किया था बाय यूजिंग दिस कैंपेन ऑब्जेक्ट. सो बेसिकली कैंपेन ऑब्जेक्ट इज स्टोरिंग द डेटा विच इज रिलेवेंट विद द कैंपेन. तो जैसे कौन सा कैंपेन रन कर रहे हो, कब से स्टार्ट हो रहा है, कब एंड हो रहा है, कितने रुपीज का इस कॉस्ट एस्टिमेशन है, कितना एक्चुअल एक्सपेंडिचर है, वो सारी चीजें कैंपेन में मेंटेन होती हैं. सर, then after running the campaign we got some lead, some business, some individual entity are interested in uh, in a business जो आपके साथ वो करना चाहते हैं. सो वो लोग आपके साथ कांटेक्ट करेंगे. वंस दे कांटेक्ट, वी गॉट अ लीड फ्रॉम द कैंपेन. सो वी stored that lead in our database, or we called it as a CRM. ओके, तो वो लीड क्या हो सकती है, वो लीड कोई कंपनी भी हो सकती है, वो लीड कोई इंडिविजुअल पर्सन भी हो सकता है. अगर वो इंडिविजुअल पर्सन है तो हमने देखा कि दैट इज बिलोंगिंग्स टू द B2C मॉडल, एंड अगर वो कोई कंपनी हमारे साथ टाइप करना चाहती है देन दैट इज गोइंग टू बी अ B2B मॉडल. Okay, and then we stored all the information relevant with that company or that individual for the future purpose. So that is called lead. And when after that marketing team will connect with the lead, जो भी कंपनी या फिर इंडिविजुअल होगा उसके साथ डिस्कस करेंगे. डिस्कस करने के बाद में दे ट्राई टू कन्वर्ट दैट लीड. once the lead is converted, then that lead is converted into account, contact and opportunity. So what is account? So whenever lead is converted we need to create an account जिसके साथ में हम लोग बिजनेस करने वाले हैं. So the company or the partner or the competitor जो भी होगा, that person or that thing is now converted into account. So उसके बाद में एक कांटेक्ट आता है. कांटेक्ट इज द कांटेक्ट पॉइंट ऑफ दैट अकाउंट. फॉर एग्जांपल एक कंपनी हमारे साथ में बिजनेस करना चाहती है, तो जैसे हम लोगों ने कल डिस्कस किया था कि दैट सैमसंग इज रनिंग देयर कैंपेन, देन दे गॉट अ लीड फ्रॉम ओयो. तो ओयो के जो कंपनी में सॉरी ओयो कंपनी से जिसका फोन हमको आता है, फॉर एग्जाम्पल मैनेजर का अगर फोन आता है तो मैनेजर इज द कॉन्टेक्ट पर्सन फ्रॉम दैट अकाउंट. सो ओयो इज द अकाउंट एंड द मैनेजर हु कॉल अस फॉर द बिजनेस, then that manager is called a contact person for us, right? Then that contact person, एक contact person भी हो सकता है, multiple contact person भी यहाँ पे हो सकते हैं. So you can create a multiple contacts for a particular account. Then we also talk about the opportunity. Opportunity basically cost estimate करता है कितना revenue generate होगा. So these are the things which we already cover. Let's go to your developer org. Now we can see we already created two opportunities. One opportunity
for the tapadia, and another opportunity is for, oh, right, another opportunity which is basically relevant with the, I think I have created opportunity for, actually I have created this dummy data डेवलपर बैच में हमने ये डमी डेटा बनाया था, दैट्स व्हाई. And one more opportunity that we have created called Paradise Hotel, right? So these are the opportunities which we already have. और इधर हम लोगों ने देखा था कि डिटेल्स के अंदर इसका एक अमाउंट कैलकुलेट होता है, एक्सपेक्टेड रेवेन्यू कैलकुलेट होता है, एंड दैट एक्सपेक्टेड रेवेन्यू एंड अमाउंट इज कैलकुलेटेड. ये वेग वैल्यू हम लोगों ने दिया था, एक फेक वैल्यू हम लोगों ने दिया था, और वो डायरेक्टली आप यहाँ पे शोन हो रहा है अपॉर्चुनिटीज के अंदर. ना, अब ये वैल्यू हम लोग वेग वैल्यू नहीं डाल सकते, कोई फेक वैल्यू यहाँ पे हम लोग नहीं दे सकते. वी नीड टू कैलकुलेट द अमाउंट बेस्ड ऑन दी दैट ऑर्डर विच वी गॉट फ्रॉम दी पर्टिकुलर अकाउंट. तो ये वैल्यू कैसे कैलकुलेट करना है, एंड टू कैलकुलेट दैट वैल्यू वी हैव अ न्यू object with us called as product. So what is product? Product is a unit of a business. अब आप कोई, लेट्स से सैमसंग ही हम लोग एग्जांपल में ले रहे हैं, तो सैमसंग इज द बिजनेस और द सैमसंग इज द कंपनी हु रन देयर बिजनेस. उसके यूनिट कौन से होंगे? तो बेसिकली सैमसंग सेलिंग देयर टीवी, सेलिंग देयर रेफ्रिजरेटर, ओवन, मोबाइल फोन्स. So mobile phones, TV, refrigerator, ovens are the unit of that business, and that is called as a product, right? And you remember that each product is always associated with their standard price. तो उसका एक स्टैंडर्ड प्राइस होगा, वो स्टैंडर्ड प्राइस उसके साथ, वो प्रोडक्ट के साथ में क्या होगा, ऑलवेज अटैच होगा. सो इफ यू आर टॉकिंग अबाउट द ओवन और एसी और रेफ्रिजरेटर, they have their own standard price associated with that product, right? So, and the second thing is price group. So the deviation, or the variation in the product price, which is going to be maintained by this object called as price group. फॉर एग्जाम्पल, अब आप लोग जनरली जाते हो मॉल्स में, मॉल्स में जाने के बाद में आप क्या करते हो, कुछ ऑफर दिखते हो तो आप परचेसिंग कर लेते हो. लेट्स से आप लोग चले गए रिलायंस ट्रेंड्स के अंदर, तो रिलायंस ट्रेंड्स के अंदर जनरली ऐसा ऑफर होता है कि सर एक लोगे तो 10% डिस्काउंट, दो दो प्रोडक्ट लोगे तो 20% डिस्काउंट, तीन लोगे तो 40% डिस्काउंट. सो एक ही प्रोडक्ट है बट उसकी अलग अलग प्राइस वैरिड हो रही है. सो अ प्रोडक्ट कैन हैव मल्टीपल प्राइस. स्टैंडर्ड प्राइस एक ही होगा, लेट्स से 1000 रुपीज, तो 1000 से ऊपर वो नहीं बेच सकता है, लेकिन उसके नीचे बेचने के लिए वो डेविएशंस ला सकता है. तो अलग अलग प्रोडक्ट की अलग अलग प्राइस हो सकती है. लेट्स से मानसून ऑफर में 50% ऑफ दे रहे हैं, वेयर एज वही आप दिवाली ऑफर में 30% ऑफ दे रहे हैं. वही आप समर सीजन का जो सेल लगता है वहां पे 20% दे रहे हो. तो सेम प्रोडक्ट हैव अ डिफरेंट प्राइस इन अ डिफरेंट ऑफर्स, राइट? आप लोग बिग बिलियन डे में परचेसिंग करते हो फ्लिपकार्ट पर से, तो वहां पे कुछ प्राइस डेविएशन अलग होता है. नॉर्मल डेज में डेविएशन अलग होता है, कभी कभी ऑफर प्राइस होती है, वहां पे डेविएशन अलग होता है प्राइस के अंदर. तो प्रोडक्ट हैविंग अ डिफरेंट प्राइस, एंड दैट शुड बी मेंटेन इन अ प्राइस बुक. सो प्रोडक्ट और प्रोडक्ट की प्राइस बुक हम लोगों को अलग से मेंटेन करनी होती है, एंड बेस्ड ऑन दैट प्रोडक्ट एंड प्राइस बुक we are going to calculate the actual amount in your opportunity. Now, to do that, let's try to create a product first of all. And to create a product, so you can see there is no product tab available over here. So to get that particular tab, you need to click on this app launcher, and you just need to search for the product. So you can see a product item is available over here. You just click on that to open that product tab. Now your product tab has been opened. No product is right now available with us. अभी क्या करेंगे, अभी न्यू प्रोडक्ट ऐड करेंगे. एंड टू ऐड दैट न्यू प्रोडक्ट वी हैव अ न्यू बटन ऑन द राइट हैंड साइड अपर मोस्ट कॉर्नर. यू जस्ट क्लिक ऑन दैट to create the product. Now I am going to create a product.
बिकॉज आई एम रनिंग द सैमसंग एज माई कंपनी, तो मैं इधर लिखूंगा सैमसंग, प्रोडक्ट नेम देना है ना, सैमसंग AC. लेट्स से प्रोडक्ट कोड इज 236. Let this product active, it means this product is available with us. If you have any family relevant with that product, you can add it. Add the product सर description. Hello, और वो डैशबोर्ड के बाजू में आपके जैसा ऑप्शन नहीं आ रहा सर? from where? Are you just search for the product first of all. You just go and search for the product. Once you get a product, you just click on that product. When you click on that product, then that particular tab is going to be open. Huh? ओके सर। You just need to open that tab. आपका टैब ओपन हुआ है क्या? यस सर। हो गया? Okay. Once you open this particular tab, you can see no product is going to add over here. Now I need to add my own product, and to add my product, I need to click on new, add the name of the product. Let's say Samsung AC. Let's activate this product. That the activate is representing that the product is available with us. गिव द प्रोडक्ट कोड, जो भी सीरीज आप उस प्रोडक्ट से रिलेवेंट ऐड करना चाहते हो यहाँ से दे सकते हो, एंड दिस सिंपली क्लिक ऑन सेव एंड न्यू. आई एम गोइंग टू ऐड one more product over here. Let's say Samsung refrigerator, and the port is 1A23. Let's active this and let's click on save. Now I have added two products into my product list. So I'm going to first of all open the first product, that is AC, Samsung AC. Now I need to associate a standard price with this particular product. तो इसको ऐड करने के लिए you have this related tab near to this detail. इस पे क्लिक करेंगे. इस पे क्लिक करने के बाद में यहाँ पे आपको प्राइस बुक लिख के आएगा, और यहाँ पे ऑप्शन आता है add a standard price. To add a standard price, you just need to click on this button. Once you click on this button, it will ask about the standard price book of Samsung AC. Let's say we have a standard price of 50,000 rupees, and you just need to click on save. The standard price is reflected over here. So product detail is available in a detail tab, whereas the price is associated with that particular product is available in a related tab. So you can see a standard price is now associated with the Samsung AC. Similarly, what I'm going to do, I am going to associate a standard price with this Samsung refrigerator. To do that, I am going to open this Samsung refrigerator, go to the related tab, and then just click to the add standard price. Once I click on add standard price, here I am going to assign a standard value. Let's say 30,000 is the standard value. Let's click on save. Now you can see the standard price is associated with this AC, sorry, refrigerator is 30,000. So detail में आपको product के बारे में पता चलेगा, and related में आपको price के बारे में पता चलेगा. So in that way, you are supposed to add a product into this product object. अब क्या करेंगे, once you add the product, इस product के अंदर हम लोग प्राइस बुक असाइन करेंगे. लेट्स से दिवाली ऑफर में सेम एसी में कितने रुपीज में सेल करने वाला हूँ, एंड सिमिलरली न्यू ईयर ऑफर के टाइम पे मैं कितने रुपीज में वो सेम एसी में सेल करने वाला हूँ. इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, ऑफर्स असाइन कर सकते हैं इन अ प्राइस बुक. एंड टू डू दैट, यू जस्ट नीड टू गो टू दिस ऐप लॉन्चर वंस अगेन एंड सर्च फॉर द price books. Now you can see this price books available over here. You just need to click on that. One new tab is open relevant with the price books now. Now there is no price books available recently with us. Now what I am going to do, I am going to create my own price book. So I am going to create a new price book with a name called
Diwali offer. Let's active this price book. If you want to add any description relevant with this, you can add it. Let's say Diwali Dhamaka offer. Whatever the description you want to add, you can add it over here. And let's click on save. Now you can see the price book has been created successfully. Once you create a price book, you need to associate a product with this price book. तो कौन से प्रोडक्ट इस प्राइस बुक में एसोसिएट करेंगे ये आपको ऐड करना पड़ेगा. एंड टू डू दैट we need to go to this related tab, and in this related tab we got the first thing called as price book entry. इसमें आपको बटन मिलेगा. You can see the button called add product. You can add a product by clicking on that. Now these are the products which provided by the Salesforce, और कुछ इसमें प्रोडक्ट हो गए जो हम लोगों ने क्रिएट किया है. सो विच प्रोडक्ट वी हैव क्रिएटेड? वी क्रिएटेड Samsung AC and Samsung refrigerator. These two products that we created, and rest of the product is standard product which is given by the Salesforce. So I choose these two products which I want to add to this particular offer, and then I need to click on next. Once I click on next, now you can see the list price. मतलब ये standard price यहाँ पे show हो रहा है. That standard price of this AC is 50,000 rupees, and standard price of this Samsung refrigerator is 30,000 rupees. So what I am going to do, ये दिवाली ऑफर में मैं इसको 50,000 नहीं 40,000 में बेचूंगा. And over here I am going to sell the refrigerator with a price of 25,000 rupees. So I will change the list price of this AC from 50,000 to 40,000 for Diwali offer. Similarly, I change the price of Samsung refrigerator from 30,000 to 25,000 for this Diwali offer. And then I just need to click on save. Now, once I click on save, you can see there are two products now available in a Diwali offer. One is the Samsung AC, whose list price is 40,000, but its standard price, इस पे क्लिक करके डिटेल में जाओगे, you can see the standard price associated with this is 50,000, and Diwali offer price is now associated as a 40,000 offer. Sorry, 40,000 rupees. So in that way, you are supposed to add a price book into your CRM. So I have created this Diwali offer. Now once again, I am going to create one more price book called as New Year offer. Let's active this and then click on save to create this offer. Now add a product, go to the related tab, click on add product. Now once again I am going to select the same two products, click on next. On Diwali I am going to sell this AC at the price of 45,000 rupees, and I'm going to sell the Samsung refrigerator with a price of 23,000 rupees, and then just click on save. Now you can see you have these two things added over here. Hello. रिपीट करो सर थोड़ा. हाँ तो ये रिपीट ही कर रहा हूँ ना. वापस एक और प्राइस बुक ऐड करेंगे, है ना, रिपीट ही हो जाएगा. नहीं, आपने ऐड की ना अभी प्राइस बुक उसमें. हाँ ना, मैं कल वापस से भी एक बार फिर से बता दूंगा, कोई इशू नहीं. सो you can see the product is added successfully to this new year offer. Once again, we go to this price book and try to create one more price book with the name monsoon offer. Let's say monsoon offer. So we are going to create one more offer over here. Let's click on save. Now offer is created successfully. Now we need to associate a product with this offer, and to do that, go to this related tab. Once you go to the related tab, you can see there is no entry available in a price book. So we need to associate a product with this price book, and to do that, we have this add product button over here.
you just need to click on this add product button to add your product. Now here we have a list of a product. So from that list, you need to choose the particular product which you want to add into your price book. मुझे कौन सा ऐड करना है? मुझे ऐड करना है AC and refrigerator. So I choose these two product from this product list and I need to click on next. Once I click on next, you can see the standard price is reflecting over here. But I know मुझे ये 50,000 में नहीं बेचना है. मानसून प्राइस में मैं इसका प्राइस कम कर दूंगा क्योंकि तब एसी का सीजन निकल जाता है. सो वो टाइम पे एसी सस्ते हो जाते हैं. सो आई एम गोइंग टू सेल इट बाय 38,000 रुपीज. एंड देन रेफ्रिजरेटर का भी टाइम वहां से निकल जाता है. सो आई एम गोइंग टू सेल इट बाय 22,000 rupees. So I put the selling price in a monsoon offer by changing the standard price. So standard price था 50,000, वो change करके मैंने किया 38,000. इसका था 30,000, वो change करके मैंने किया 22,000. You can manually do that. And then finally you just need to click on save to add that product into the price book. I hope now you clear this thing. Let's move ahead. Now we add a product into the product object. We also add a price book and we associate the product with this price book. And we have three price book with us. One is monsoon offer, second is new year offer, and third is Diwali offer. So we have three offers with us. Now, अब क्या होगा? अब सैमसंग ने एक कैंपेन किया था, राइट? और वो कैंपेन में टीवी एड्स हमने रन किया था. टीवी एड्स के अंदर हम लोगों को एक लीड मिला था, right? And that lead is now converted into accounts, contact, and opportunity. So we got the contact. इधर contact में जाने के बाद में we got the contact called गोपाल माधव. पैराडाइज होटल से हमको कांटेक्ट किया था. उसका कांटेक्ट पर्सन था गोपाल माधव और उन्होंने हम लोगों को कुछ ऑर्डर दिया. ओके, सो वो हो गया हमारे लिए अपॉर्चुनिटी. तो कितने रुपीस का ऑर्डर था? तो बेसिकली पैराडाइज होटल का हमारा ऑर्डर था 4 लाख रुपीज का, आई थिंक, राइट. 4 लाख रुपीज का हमारा ऑर्डर था. भाई ये तो हमारी मोगम वैल्यू गई है ना, वेग वैल्यू गई. हम लोगों ने फेक वैल्यू यहाँ पे एंटर किया था. बट नाउ वी आर गोइंग टू कैलकुलेट द वैल्यू based on the order given by that particular paradise hotel. Okay, and to do that, अब देखो यहाँ पे on my right hand side you can see a product tab over here in a related. So यहाँ से आप क्या कर सकते हो? आप प्रोडक्ट को ऐड कर सकते हो for this opportunity. So I am going to select this and I am going to add the product. So first of all I am going to select the offer. Right now हम लोग क्या करेंगे? दिवाली ऑफर दे देंगे इनको. लेट्स सेव दिस. नाउ आई नीड टू चूज द प्रोडक्ट फ्रॉम द दिवाली ऑफर. सो दिवाली ऑफर में ये दो प्रोडक्ट है. सो आई एम गोइंग टू चूज दिस टू ऑफर्स or two product from this and then click on next. Once you click on next, it will ask you about the quantities. कितने quantities में AC चाहिए? Let's say Paradise Hotel requires 30 AC and 20 refrigerator. अब देखो मानसून का प्राइस हमने एसोसिएट किया था 40,000 रुपीज एंड 25,000 रुपीज. तो वो यहाँ पे ऑटोमेटिकली रिफ्लेक्ट हो चुका है. यू कैन एसोसिएट अ डेट कि कौन से डेट की पे चाहिए. तो लेट्स चूज टुडेज डेट. ओके, नहीं लिखा तो भी चलेगा. दीज आर द ऑप्शनल थिंग्स एंड स्टार जहाँ पे मेंशन है दीज आर द मैंडेटरी थिंग्स. सो 30 क्वांटिटी रिक्वायर्ड ऑफ एसी, 20 क्वांटिटी रिक्वायर्ड ऑफ रेफ्रिजरेटर एंड उसका प्राइस मानसून ऑफर के अकॉर्डिंग तो जो है वो यहाँ पे मेंशन है. नाउ यू जस्ट नीड टू क्लिक ऑन सेव. Now, once you click on save, now you can see the opportunity amount has been changed automatically based on the product that you choose and the quantity you mention as well as the price book जिसके अंदर वो प्राइस मेंशन है. तो प्राइस बुक से प्राइस आया, प्रोडक्ट में से प्रोडक्ट आया, क्वांटिटी आपने दिया एंड यू कैन सी द अमाउंट नाउ बीइंग चेंज. सो 25,000 रुपीज के हिसाब से आपने 20
क्वांटिटी रेफ्रिजरेटर की दिया है एंड 40,000 के हिसाब से 30 क्वांटिटी आपने एसीज के दिए हैं एंड यू कैन सी द अमाउंट इज नाउ चेंज क्लियर. नाउ इफ यू गो टू द कैंपेन राइट एंड इफ यू गो टू दिस टीवी एड और इधर इसके डिटेल्स में अगर जाओगे देन यू कैन सी दैट अपॉर्चुनिटी प्राइस इज आल्सो रिफ्लेक्टेड ओवर हियर इन अ कैंपेन ऑब्जेक्ट. सो ये कैंपेन में से हमको इतने रुपीस का रेवेन्यू भी जनरेट होगा राइट. सो दिस इज ऑल अबाउट द प्रोडक्ट एंड अ प्राइस बुक जो हम लोगों ने यहाँ पे मेंशन किया है. तो ये अपने मन से देने वाली वैल्यू नहीं है, ये वैल्यू कैलकुलेट होगी. किसी भी बिजनेस में ये वैल्यू क्या होनी चाहिए, कैलकुलेट होनी चाहिए बेस्ड ऑन द ऑर्डर दैट वी रिसीव. अब देखो इतना आसान है क्या, इतना आसान नहीं है कि आपने बोला उनको कि कौन से चाहिए प्रोडक्ट और वो प्रोडक्ट आपको मिल गए. ऐसे नहीं होगा. पहले क्या, या फिर वो आपको ऑर्डर मिल गई, ऐसा नहीं होगा. पहले आपको क्या करना पड़ेगा, पहले आपको लोग उसको वो पर्टिकुलर पर्सन के साथ में कांटेक्ट करना पड़ेगा. टू हुम यू आर गोइंग टू कांटेक्ट द कांटेक्ट पर्सन. कौन है कांटेक्ट पर्सन? तो गोपाल माधव इज अ कांटेक्ट पर्सन फ्रॉम द पैराडाइज होटल. इसके साथ हम कांटेक्ट करेंगे. कांटेक्ट करने के बाद में जो अपॉर्चुनिटी आएगी हमारे पास में राइट, दैट इज पैराडाइज होटल. वो हमको प्रोडक्ट बताएगा कि ये प्रोडक्ट हमको चाहिए इतने इतने क्वांटिटी में. देन वी ऐड दैट प्रोडक्ट और हमको हमारा एस्टिमेटेड कॉस्ट मिलेगा कि इतने रुपीस का बिजनेस हम इसके साथ में कर सकते हैं. देन नेक्स्ट स्टेप इज टू सेंड अ कोटेशन राइट. विदाउट सेंडिंग अ कोटेशन कोई भी चीज फाइनलाइज नहीं होगी. सो अब क्या करना पड़ेगा, वी नीड टू सेंड अ कोटेशन. सो बेसिकली वी आर गॉन थ्रू द यूज केस और सिनेरियो और जिसके थ्रू हम लोग ये सारी चीजें समझ रहे हैं. सो नेक्स्ट इज टू सेंड द कोटेशन टू दैट पर्टिकुलर कॉन्टेक्ट पर्सन. So what is quotation? Quotation is a selling price estimation shared with the account based on the product and the price book selected. तो आपने आपके कांटेक्ट पर्सन ने आपको जो भी प्रोडक्ट और जो भी क्वांटिटी बोली होगी उसके हिसाब से आपने उसको क्या प्राइस बुक ऑफर किया है उसका कोटेशन उसको सेंड करना पड़ेगा. एंड टू सेंड अ कोटेशन वी नीड टू चेक वेयर इज द कोटेशन टैब इज देयर. ओके, सो ये अपॉर्चुनिटी है, ये अपॉर्चुनिटी को हमको कोटेशन सेंड करने का है. सो टू सेंड द कोटेशन आई नीड टू सर्च फॉर द quotation. If I go to the activity, I can't see any quotation over here. If you go to the detail page, you can't see any quotation there. यहाँ पे on the right hand side you can see control contact roles है, partners है, stage history है, but below that stage history nothing is appear. If you go to this app launcher and search for the code, you can't see anything with a name called code. है ना. तो अभी बेसिकली ऐप लॉन्चर में तो सारी चीजें फाइंड आउट हो जाती है, तो यहाँ पे भी हमको कोड नहीं मिला है. Why it is not showing anything relevant with the code? The reason is that code is by default is disabled or hidden from the opportunity, right? So what we need to do, we need to first of all enable the code object and then we use that code object to create a code. And to do that, you just go to your developer org, go to your pass site, that is platform as a service, go to your quick find and search for the code. And in the codes, we have a code settings. So just click on code setting. And in a code setting here, you can see that the code object is disabled now. So to enable this, we just need to click on enable and then just need to click on save. जैसे ही आप सेव पे क्लिक करते हो तो ये जो कोड का ऑप्शन है कहाँ पे अवेलेबल होना चाहिए ये पूछेगा. सो आई वुड से कि जितने भी अपॉर्चुनिटीज के लेआउट्स हो गए वो सारे लेआउट्स पे आप क्या करो, ये कोड्स वाला ऑप्शन मुझे दे दो. सो आई विल चूज ऑल द लेआउट्स रिलेवेंट विद द अपॉर्चुनिटी ताकि वो कोड्स हमको दिखाई दे एंड देन जस्ट नीड टू क्लिक ऑन सेव. Now once you do that, now your code is now enable और वो अभी हमको इधर दिखेगा. So go to your SaaS site, that is software as a service. Go to your opportunity. Let's open this Paradise Hotel opportunity and
इफ यू गो टू द बॉटम, इसको रिफ्रेश करना पड़ेगा, सो रिफ्रेश दिस एंड नाउ गो टू योर राइट हैंड साइड में जो चीज है उसके बॉटम में जाना है, सो गो टू द बॉटम ऑफ दिस राइट हैंड साइड। नाउ यू कैन सी द थिंग रिलेवेंट विद द कोड, राइट। तो यहाँ पे कोड्स मिल गया हम लोगों को। नाउ व्हाट वी आर गोइंग टू डू, वी आर गोइंग टू जनरेट अ कोड्स फॉर द particular contact. So I'm going to click over here to create a new code, and here we have an option called new code. You just need to click on new code. So I'm going to create a quotation for the particular person which is belongs to Paradise Hotel. So the opportunity name is Paradise Hotel. Quote name is first quote. अब देखो एक ही कोड पे काम होगा ऐसा नहीं है, वो एग्री भी कर सकते हैं, वो लोग एग्री भी नहीं कर सकते। तो ये वर्जन 1 होगा हमारा फर्स्ट कोड का। लेट्स हैव एक्सपायरी डेट, 1 वीक तक हम लोग ये ऑफर उसको अलाउ करेंगे, 1 वीक में उसने हम लोगों को बताना चाहिए। देन यू कैन सी prepared for Gopal Madhav, which is the contact person from the Paradise Hotel. That value is automatically populated, and shipping address वगैरह mandatory नहीं है, that's why I'm not going to fill this right now. You can fill as per your business need, right? So these are things, इसमें को हम करेंगे save. Once I click on save, you can see that quote is now available with us with some ID called 00000001. So to open that code, I need to click on that particular ID. Once I click on that ID, you can see the details of that code. ये सारी डिटेल्स यहाँ पे शो हो रही है। अब कोटेशन के अंदर सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, हमको बताना पड़ेगा कि कौन सा प्रोडक्ट हमको ऐड करने का है, राइट। सो यू कैन सी द कोड के अंदर ऑलरेडी आइटम्स ऐड हो चुके हैं। क्यों ऐड हुए, क्योंकि हमने अपॉर्चुनिटीज के अंदर, इधर आप देख सकते हो अपॉर्चुनिटीज के अंदर हमने इस पर्टिकुलर अपॉर्चुनिटी के लिए आपने ऑलरेडी प्रोडक्ट असाइन कर लिए थे, तो यही प्रोडक्ट की लिस्ट आपके कोड में ऑटोमेटिकली रिफ्लेक्ट होगी। सो यू कैन सी दिस फर्स्ट कोड एंड इन रिलेटेड यू कैन सी दिस प्रोडक्ट, देयर प्राइस, देयर क्वांटिटीज, ये ऑलरेडी यहाँ पे आ चुका है ना। तो यहाँ पे आप ये प्रोडक्ट ऐड कर लिया है। नाउ यू कैन सी द वेरियस स्टेजेस ऑफ दिस कोड। तो कोड ड्राफ्ट हो चुका है, नीड टू बी रिव्यू, हम लोग मार्क करेंगे नीड टू बी रिव्यू। एंड इससे क्या होगा, ये रिव्यू के लिए गया है, अंडर रिव्यू है, ये सारी चीजें आप यहाँ पे मार्क कर सकते हो। तो हम लोग सेंड करेंगे और वो रिव्यू के लिए जाएगा। एक तो अप्रूवल होगा, रिजेक्ट होगा, एक्सेप्ट होगा, डिनाई होगा, दैट इज अदर थिंग। ओके, तो जैसे जैसे कस्टमर के तरफ से हमको रिस्पॉन्स आएगा उसके अकॉर्डिंग तो हम ये स्टेजेस को सिलेक्ट करेंगे। नाउ यू कैन सी दिस कोड इज नाउ रेडी। नाउ नेक्स्ट स्टेप क्या होता है, नेक्स्ट स्टेप ये होता है कि यू नीड टू सिंक्रोनाइज दिस पर्टिकुलर कोड विथ योर प्राइस बुक एंड अ प्रोडक्ट। अगर आप सिंक्रोनाइज नहीं करोगे, देखो यहाँ पे सिंकिंग जो है वो ऑप्शन डिसेबल है। अगर सिंक्रोनाइज नहीं करोगे, अब देखो आपने उसको भेजा लेट्स से दिवाली ऑफर, वो बोल रहा है कि नहीं नहीं राइट नाउ मानसून चल रहा है, मानसून ऑफर के हिसाब से थोड़ा सा प्राइस कम करो क्योंकि अभी डिमांड कम हो चुका है। वो आपके दिए हुए प्राइस के कोटेशन पे एग्री नहीं कर रहा है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, यू नीड टू चेंज द प्राइस। And from where you are going to change the price, you are going to change the price from the price book, right? So अगर आपने प्राइस बुक चेंज कर लिया तो प्रोडक्ट की प्राइस चेंज होगी, अगर प्रोडक्ट की प्राइस चेंज होगी तो वो चीजें ऑटोमेटिकली कोटेशन के अंदर रिफ्लेक्ट होनी चाहिए। And to do that, we need to start the synchronization between your quotation and your product. तो प्रोडक्ट में प्राइस चेंज तो कोटेशन में ऑटोमेटिकली वो चेंजेस रिफ्लेक्ट होने चाहिए। दैट्स व्हाई वी यूज दिस स्टार्ट सिंक्रोनस। Now to start synchronous, we need to go to this particular option, ये ड्रॉप डाउन है न्यू केसेस के बाजू में, इधर क्लिक करने के बाद में यू हैव ऑप्शन कॉल्ड स्टार्ट सिंक, यहाँ पे क्लिक करो। वंस यू क्लिक ऑन दैट वो बोलेगा कि आफ्टर अ कोट इज सिंक अपॉर्चुनिटी प्रोडक्ट एंड कोट लाइन आइटम आर अपडेटेड ऑटोमेटिकली, राइट। जस्ट क्लिक ऑन कंटिन्यू। जैसे आप कंटिन्यू करते हो तो इधर देखो सिंकिंग का ऑप्शन जो है वो टिक हो गया, मतलब कोट और प्रोडक्ट एक दूसरे के साथ सिंक्रोनसली वर्क करें।
Once you do that, now this code need to be sent to the contact person or the person जिस जो हाँ ये quotation को agree और sorry accept और deny करेगा. And to do that, if you go to there, you have an option for email code और उसके पहले एक option आता है create PDF. So जो भी quotation हमने बनाया है उसका पहले PDF create कर लेते हैं. And to create a PDF, you have an option called create PDF. You just need to click on this create PDF. अब देखो यहाँ पे एक पीडीएफ उसने ऑटोमेटिकली क्रिएट कर लिया है फॉर योर कोटेशन. यू कैन सी दिस कोटेशन. यू कैन ऑल्सो डाउनलोड दिस कोटेशन. यू कैन ऑल्सो print this quotation. You can see this is the quotation. In this quotation, you can see Macrito Innovation. That is our company name. Basically, इसका यूज करके मैंने ये अकाउंट क्रिएट किया था. That's why कंपनी नेम Macrito Innovation आया है. Otherwise, we can put it in here as a Samsung. ओके क्योंकि हम सैमसंग का सीनियर चेक कर रहे हैं. देन यू कैन सी प्रिपेयर्ड बाय, क्योंकि ये अकाउंट का नाम होस्ट इंस्ट्रक्टर है इसलिए यहाँ पे प्रिपेयर्ड बाय होस्ट इंस्ट्रक्टर आया. देन यू कैन सी द बिल नेम पैराडाइज होटल, द एड्रेस ऑफ दैट पैराडाइज होटल. देन यू कैन सी कि कोटेशन कौन सा है, कोटेशन नंबर, कब क्रिएट किया था, कब ये एक्सपायर होगा कोटेशन. देन who is the contact person, कौन है contact person, गोपाल माधव, their phone number and their email ID. तो मैंने आपको बताया था whenever I create that lead, मैंने बताया था कि यहाँ पे आप valid email ID दे दो, right? तो आपको valid email ID देने के लिए मैंने बोला था. तो you can see the email ID which is associated with me is now given to the गोपाल माधव. तो यहाँ पे वो आ चुका है. You can see the product description कि कौन सा प्रोडक्ट है, देन लिस्ट प्राइस क्या है, सेलिंग प्राइस क्या है, देन क्वांटिटी क्या है, एंड व्हाट विल बी द कोटेशन. अगर उसमें डिस्काउंट डिस्काउंट देना है तो आप उसमें भी डिस्काउंट लगा के यहाँ पे इस प्राइस को शो कर सकते हैं. एंड एट द बॉटम यू कैन सी द कोट एक्सेप्टेंस इंफॉर्मेशन वेयर यू हैव सिग्नेचर, नेम, टाइटल एंड डेट. ये कौन करेगा, ये कॉन्टेक्ट पर्सन करेगा या फिर अकाउंट होल्डर करेगा. तो वो साइन करेगा, नेम लिखेगा, इफ ही एग्रीज फॉर दिस कोटेशन. इफ ही डू नॉट एग्री विद दिस कोटेशन तो उसको रिजेक्ट करेगा, बोलेगा कि नहीं नहीं वापस से दूसरा कोटेशन दे. सो सिमिलर वे यू आर सपोज टू क्रिएट अ कोड एंड देन you need to click on save to save this code. You can directly save and email this code to the contact person. Now ये save हो चुका है and to see that particular thing, go to the related object or related tab, and in this related tab you can see code PDF and you have this first PDF with you which we just created for this quotation, right? Now to send this quotation to the owner or the account, we need to click on this particular option drop down. यहाँ पे इधर click कर सकते हैं and then click on email PDF. So you just need to click on email PDF. Now क्योंकि ये अकाउंट मैंने इसी ईमेल आईडी से क्रिएट किया तो इसी ईमेल आईडी से मेल जाएगा. एंड वी नो दैट गोपाल माधव इज द कॉन्टेक्ट पर्सन, राइट? उसका वैलिड ईमेल आईडी हमने दिया था, हमारा ईमेल आईडी. तो मैंने बोला था आप लोगों की वैलिड ईमेल आईडी इसीलिए देना है क्योंकि किस तरह से कम्युनिकेशन होता है ये हम लोगों को शो करने का है. सो यू कैन सी द मैक्रीटो इनोवेशन ईमेल इज देयर एंड यू कैन ड्राफ्ट अ सब्जेक्ट, लेट्स से फर्स्ट कोड, right? And then you just type some message, hello sir, please find the attachment for quotation, right? ये मैंने मैसेज ड्राफ्ट किया है. आई जस्ट नीड टू क्लिक. इधर आप देख सकते हो ये जो फर्स्ट कोट नाम का पीडीएफ ये इसके साथ लिंकअप हो चुका है. एंड जस्ट नीड टू क्लिक ऑन सेंड टू सेंड दैट, सेंड एंड अटैच एंड सेंड, राइट? ये मैंने सेंड कर दिया ईमेल. नाउ यू कैन सी दैट ईमेल. जस्ट गो टू देयर जीमेल. जीमेल में जाने के बाद में यू जस्ट नीड टू सिलेक्ट दिस मैक ईमेल आईडी, गो टू योर ईमेल. इधर जाने के बाद में यहाँ पे आपको वो मेल मिलेगा, दैट इज फर्स्ट कोट, है ना? सो दैट ऑटोमेशन हैज बीन डन. तो आप कोटेशन क्रिएट करके इधर सेंड कर सकते हो. इफ यू ओपन दिस यू हैव योर कोटेशन विथ यू. इसको ओपन कर सकते हो. नाउ यू कैन सी योर कोटेशन.
राइट। तो ये कोटेशन हम लोगों ने क्रिएट किया है। नाउ इफ यू आर एग्री विद दिस कोटेशन, यू कैन साइन दिस पर्टिकुलर कोटेशन, इधर साइन करके आप भेजो, अदरवाइज यू कैन रिजेक्ट देम एंड आस्क देम फॉर द न्यू कोटेशन। सपोज करो उसने अभी न्यू कोटेशन हम लोगों को पूछा है, तो हम क्या करेंगे, वापस अपॉर्चुनिटीज में जाएंगे एंड अब हम उसको नया कोटेशन देंगे बाय मानसून ऑफर। इसमें प्राइस कम होने वाला है। सो टू चेंज द pricing, what I'm going to do, I am going to select or I'm going to edit this। एडिट करोगे तो इधर से आप, सॉरी, हमको क्या करना है, बेसिकली मानसून ऑफर देना है। तो मानसून ऑफर के लिए आप क्या करोगे, यू जस्ट गो टू दिस प्रोडक्ट एंड यू चूज द, or you can add a product, or you can choose a price book first of all। So I'm going to change the price book from Diwali offer to monsoon offer and then click on save। जैसे मैं सेव कर देता हूँ, तो ये जो प्रोडक्ट है, you can't update the price book। You can go to add a product। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आई नीड टू डिलीट दिस। मैं क्या करूंगा, पहले इस प्रोडक्ट को डिलीट कर दूंगा फ्रॉम द प्रोडक्ट लिस्ट। So I'm going to delete this and then I choose the, or I can add the product। ओके, एंड वापस इधर दिवाली ऑफर दिखा रहा है। आई नीड टू assign a product by using a Mansoor offer, and to do that I need to choose a price book first of all। I will change the price book from Diwali offer to Mansoor offer। Let's click and save। Now the offers change। Now I'm going to add a product from the Mansoon offer। Now you can see the Mansoon offer से relevant product है, उसकी pricing आ गया, यहाँ पे आ चुकी है। Now I'm going to select this, then click on next। I know that Paradise Hotel required 30 quantity of AC, and then next is 20 quantity from the refrigerator। Then this next need to click on save। Once you click on save, now your opportunity value has been changed from 17 lakh rupees to 15 lakh 80,000 rupees। And if you go to your quote, first quote, you can see the price also change over here, right? And ये हमारा फर्स्ट पीडीएफ था। अभी हमको सेकंड पीडीएफ जनरेट करना पड़ेगा, उसको सेंड करना पड़ेगा। सो व्हाट वी आर गोइंग टू डू, we are going to create a PDF for the new quotation। I just need to click on save to save the quotation. But before that, we need to check whether the values are reflected perfectly or not। You can see the price, quotation price is now changed from 17 lakh to 15 lakh 80,000 rupees। Save the quote। Go to your related tab। Here you can see the second version 2, right? Version 2 of your first quote now been available। Now send this PDF once again to our customer or the new, let's say, quotation। यहाँ पे फिर से लिखेंगे मैसेज, हेलो सर, an attachment for new quotation, right? And then finally you need to click on send to send this particular mail to that particular person। Now here you can see new mail can, न्यू मेल इज रिसीव्ड टू अस। इसको रिफ्रेश कर देते हैं। देखो अब ये न्यू मेल मुझे रिसीव हुआ है। टू गो देयर एंड सी to this particular quotation, now the price is changed। now I am agree to deal with this price। अब मेरे को लग रहा है कि ये सही प्राइस मेरे को मिल गया है, अब मैं इसके साथ में डील कर सकता हूँ, सैमसंग के साथ में। देन आई नीड टू साइन ऑफ दिस पर्टिकुलर quotation एंड रिवर्ट बैक टू द सेल्सफोर्स। तो अब ये साइन करने के लिए इसका प्रिंट आउट निकाल के मैन्युअली साइन करके स्कैन करके भेजेगा क्या? नहीं। वी हैव अ वेरियस ऑप्शन फॉर द डिजिटल सिग्नेचर, and to do that, what we need to do, we need to go to the new tab and search for the app exchange
in Salesforce. Okay, and if you go to this app exchange, तो यहाँ पे मुझे मेरे पास में वेरियस एप्लीकेशन अवेलेबल होंगे फॉर द डिजिटल सिग्नेचर। तो ये जैसे हमारा प्ले स्टोर होता है, वैसे यहाँ पे सेल्सफोर्स का ऐप एक्सचेंज होता है, जहाँ पे आप अपना ऐप बना के ऐड कर सकते हो। तो जिसको वो एप्लीकेशन चाहिए वो डाउनलोड करके यूज कर सकता है। सो आप उसके लिए कॉस्टिंग भी चार्ज कर सकते हो, और फ्री ऑफ कॉस्ट देना है तो वो भी कर सकते हो। लेट्स सर्च फॉर द एप्लीकेशन फॉर डिजिटल सिग्नेचर। Once you search for this digital signature, you can see the list of application: Sign Now, Signature Anywhere, Sign Butler, Adobe Sign Trust, है ना। So these are the application which is already being available on a Salesforce। तो क्या करेंगे, ये application को use करेंगे, आपके quotation को sign करेंगे, and after signing this quotation, that quotation is now revert back to your Salesforce. Once you receive this कोटेशन, तो फिर क्या, अभी कोटेशन पे एग्री हो गया, सब हो गया, तो अभी बिजनेस हमारा ग्रो करेगा, आगे लेके जाएंगे इस बिजनेस को। ओके, सो अपॉर्चुनिटीज में आपको आपका अमाउंट मिल गया है, आपने प्रोडक्ट ऐड किया, आपने प्राइस बुक ऐड किया, आपने कोटेशन भी भेजा, और कोटेशन डिजिटली सिग्नेचर करके आपके अकाउंट ने, आपके कॉन्टैक्ट ने आपको रिवर्ट किया है। यहाँ तक सही है। वंस यू डू दैट, देन नेक्स्ट ऑब्जेक्ट यहाँ पे आता है कोटेशन के बाद में। दैट ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड कॉन्ट्रैक्ट। अभी हम जाएंगे कॉन्ट्रैक्ट, एग्रीमेंट करेंगे बिटवीन अवर ऑर्गेनाइजेशन एंड द ऑर्गेनाइजेशन विच वांट अ बिजनेस विद अस, राइट। तो उन ये दोनों के साथ में क्या होगा, कॉन्ट्रैक्ट क्रिएट होगा। एंड वंस वी डन विद अवर कॉन्ट्रैक्ट, फिर हम लोग लेंगे ऑर्डर, right? And once we done with the order, that order is considered to be an asset. Okay, तो ये तीन ऑब्जेक्ट अभी हम लोगों को देखने के हैं। The first object is our contract, and to create a contract, I need to click on App Launcher and search for the tab called Contracts. Now here you can see Contracts. तो कॉन्ट्रैक्ट लाइन आइटम भी नहीं चाहिए, सर्विस कॉन्ट्रैक्ट्स भी नहीं चाहिए, हमको चाहिए कॉन्ट्रैक्ट्स। तो जस्ट क्लिक ऑन कॉन्ट्रैक्ट्स टू क्रिएट अ कॉन्ट्रैक्ट। आपको फ्लो समझ में आ रहा है ना? आपको समझ में आ रहा है सिनेरियो क्या हुआ? सैमसंग कंपनी ने कैंपेन रन किया, लीड जनरेट किया, लीड नाउ कन्वर्टेड इनटू अकाउंट, कॉन्टैक्ट एंड अपॉर्चुनिटी। Then we calculate the amount of that opportunity by adding a product and a price group. Once I do that, then I need to send that quotation to the contact. Once the contact receive that quotation, he will agree or deny for that quotation. We can resend the quotation to that particular contact if needed. If he agree, then we come to the agreement called as contract. Right? So अभी new contract create करेंगे, and to create a new contract, go to the contract tab, and we have a new button over here. Just click on new button. Once you click on the new button, you are supposed to create a contract between the two person. अब देखो, अकाउंट नेम किसके साथ आपको कॉन्ट्रैक्ट करने का है, तो पैराडाइज होटल एग्री विद अस कि वो कोटेशन के साथ में है, सो वी क्लिक ऑन पैराडाइज होटल। सो अकाउंट पैराडाइज होटल, इसके साथ हम कॉन्ट्रैक्ट करेंगे। इसके बिहाफ पे कौन पर्सन हमारे साथ में कॉन्ट्रैक्ट करेगा, तो गोपाल माधव इज द पर्सन फ्रॉम द पैराडाइज होटल जो हमारे साथ में कॉन्ट्रैक्ट साइन करेगा। अब ये जो पर्सन है गोपाल माधव फ्रॉम द पैराडाइज होटल, उसका टाइटल क्या है? ही इज अ मैनेजर। इफ यू रिमेम्बर, तो मैंने मैनेजर ऐड किया था। देन ये कस्टमर ने कब साइन किया था, तो लेट्स से आज इन्होंने साइन किया है। सिमिलरली स्टेटस ड्राफ्ट करके रखा है, इसको आप एक्टिवेट भी कर सकते हो। यू जस्ट पुट ड्राफ्ट फॉर अ वाइल। देन कॉन्ट्रैक्ट का स्टार्ट डेट, आज से ही कॉन्ट्रैक्ट स्टार्ट होगा, कितने टर्म्स के लिए, सो इन टर्म्स ऑफ मंथ यहाँ पे पास करने का है। सो वी आर गोइंग फॉर दिस कॉन्ट्रैक्ट फॉर नेक्स्ट 24 मंथ्स। ओके, सो ये कॉन्ट्रैक्ट एग्जिस्ट करेगा आने वाले 24 मंथ तक। ओनर एक्सपायरेशन नोटिस, ये कॉन्ट्रैक्ट 2 साल में जब एक्सपायर होगा, तो उसके कितने दिन पहले आपको ये नोटिफिकेशन आना चाहिए कि दैट कॉन्ट्रैक्ट इज नाउ गोइंग टू बी एक्सपायर। तो 30 डेज बिफोर हमको नोटिफिकेशन आना चाहिए कि कॉन्ट्रैक्ट एक्सपायर हो रहा है। देन
कंपनी साइन बाय, हमारे तरफ से कौन साइन कर रहा है, तो होस्ट इंस्ट्रक्टर जो अकाउंट का जो नेम से मैंने अकाउंट क्रिएट किया था दैट नेम, एंड हम लोगों ने कब साइन किया कॉन्ट्रैक्ट, आज हम लोगों ने साइन किया कॉन्ट्रैक्ट, दैट्स व्हाई आई एम चूजिंग द टुडेज डेट. Then on which price book you are supposed to signing this contract. So we are agree with the monsoon offer as we know. तो हम लोग मानसून ऑफर ये प्राइस बुक चूज करेंगे. देन यू नीड टू पास दिस बिलिंग एड्रेस एंड अदर थिंग्स. अगर आपको देना है तो दीजिए, बिकॉज दीज आर नॉट द मैंडेटरी थिंग्स, सो आई एम नॉट गोइंग टू पुट ऑल दोज डेटा, और मेरा एफर्ट्स में यहाँ पे वेस्ट नहीं करूंगा. सो आई एम जस्ट क्लिकिंग ऑन सेव to create this contract. Now you can see the contract has been created successfully. You can go to the detail, you can see the details of my contract. So in that way, I supposed to create a contract. Once I create a contract, I need to activate that contract. If I don't activate this contract, तो फिर वो order और assets के साथ में काम नहीं करेगा. So to do that, I need to click on activate option, which is available on this drop down on the right hand side topmost corner. Go to this and click on this active, and let's click on active. Now this contract is activated. Now this contract is activated. तो ये contract active contract करके consider किया जाएगा. Now next, अभी हमने कॉन्ट्रैक्ट भी बना लिया. नाउ नेक्स्ट क्या करना है, हम लोगों को ऑर्डर लेना है. एंड टू गेट ऑर्डर, you just search for the orders order tab. Now we can see the orders tab with us. ये order tab पे जाएंगे. Now there is no order right now available with us. Now अभी order लेंगे, and to create a new order you just need to click on new button present over here. So just click on new, और अब इसको बोलना है कि कौन से कॉन्ट्रैक्ट के थ्रू हम ऑर्डर लेने वाले हैं. सो यू हैव टू चूज द कॉन्ट्रैक्ट. तो अभी हमने एक और कॉन्ट्रैक्ट ऑलरेडी क्रिएट किया है, सो वी जस्ट नीड टू सिलेक्ट दैट कॉन्ट्रैक्ट नंबर. तो ये कॉन्ट्रैक्ट के थ्रू हम लोग क्या लेने वाले, ऑर्डर लेने वाले. कौन ऑर्डर देने वाला है, सो पैराडाइज होटल इज गिविंग मी ऑर्डर. कब देने वाला है, आज ही देने वाला है. ओके, स्टेटस क्या है, ड्राफ्टेड, फिलहाल का ड्राफ्टेड रखते हैं, बाद में उसको एक्टिव करेंगे. शिपिंग एड्रेस वगैरह आपको देना है कि ऑर्डर को कहाँ पे शिफ्ट करने का है, क्या करने का है. देन इट विल आस्क मी द कस्टमर ऑथराइज बाय, कौन से कस्टमर ये ऑर्डर लेने वाला है, सो देने वाला है. सो बेसिकली गोपाल माधव इज द पर्सन विच इज गोइंग टू असाइन दिस ऑर्डर ऑन द बिहाफ ऑफ पैराडाइज होटल. और कौन सा कंपनी, मतलब कंपनी में से कौन आदमी है जो ये ऑर्डर रिसीव करने वाला है. सो होस्ट इंस्ट्रक्टर इज द पर्सन, मतलब वी आर द यूजर जो ये ऑर्डर रिसीव करेगा. देन बिलिंग एड्रेस वगैरह आप स्पेसिफाइड करो इफ यू वांट, अदरवाइज कीप एज इट इज. देन क्लिक ऑन सेव. वंस यू क्लिक ऑन सेव, the order has been created successfully, but no product is added over here. You can go to this related tab and see zero product is added. Now what you are going to do, you need to add the products, and to add the product we have add button over here. Once you click on add button, you can see a monsoon offer there. अब ये मानसून ऑफर आप चेंज नहीं कर सकते हो, क्योंकि आपने कॉन्ट्रैक्ट में बोला है कि मानसून ऑफर पे ही आपका ये कॉन्ट्रैक्ट साइन हुआ है. दैट्स व्हाई द price book is showing monsoon offer. So I am going to select this product, click on next. अब कोटेशन तो आपने दिया, देना चाहते हो उतने से दे सकते हो, लेकिन एक्चुअल में अभी आप कितने रुपीस का और कितने क्वांटिटीज का उसके साथ में ऑर्डर दे रहे हो, दैट इज इम्पोर्टेंट. अभी मैंने पूछा था 30 यूनिट्स के लिए, बट आई एम एक्चुअली गिविंग द 40 यूनिट्स ऑर्डर, और रेफ्रिजरेटर के लिए मैं 25 यूनिट्स का ऑर्डर अभी मैं देने वाला हूँ. सो आई एम गोइंग टू सेव दिस. यू कैन सी द ऑर्डर इज नाउ प्लेस, और टोटल ऑर्डर का अमाउंट कितना हुआ है, 20,70,000 रुपीज. पहले कितना था, 15,80,000 रुपीज. ओके, विच वॉज कोटेड इन अ कोटेशन. सो जस्ट गो टू योर अपॉर्चुनिटी, go to your paradise hotel, okay, opportunity, and then go to your detail. इधर ये चीज ऑटोमेटिकली रिफ्लेक्ट नहीं हो रही है ना, दिस इज नॉट रिफ्लेक्टिंग ओवर हियर ऑटोमेटिकली.
because opportunity is basically okay. This opportunity is basically calculating uh, your amount based on the order or based on the product that you choose over here. Okay, so हमने यहाँ पे quantities 30 और 20 लिया है, that's why the amount इसके according to calculate हो रहा है. But actual में हमारे पास में कितना order आया है? Actual में हमारे पास में order आया है 40 quantity for the AC and 25 quantities for the refrigerator. So according to that, we have a order of rupees 20 lakh 70,000 dollars, 70,000 rupees. Now, once you do that, you need to activate this particular product. Okay, and to activate, we have active button over here. You just need to click on active. Now your order is active. Once you active your order, now go to your opportunity and see whether this price is reflected over here or not. Just go there, just refresh this and see whether the price is reflected over here or not. Now you can see nothing is reflected over here. It means it is not relevant with the order. It is purely relevant with the product which you added over here. Yeah. So in that way you are supposed to add order. तो अभी ये order कितने रुपीस का मिला है? 20 लाख रुपीस का हमको order मिला है. और इन्हीं orders और एक्टिवेटेड ऑर्डर्स को हम क्या कहते हैं? एसेट्स. तो हम लोग अभी एसेट्स ऐड करेंगे कि these are the assets. So basically we are going to add assets, and to add assets go to your assets tab by searching into the app launcher. Then nothing is added to the asset. So I'm going to add assets by clicking this new button, and I need to give the assets name, that is Paradise Hotel asset. Right? For which account you are going to create this asset? Paradise Hotel. For contact Gopal Madhav, product Samsung AC. Similarly, आप रेफ्रिजरेटर के लिए अलग से एसेट क्रिएट कर सकते हो. नाउ द सीरियल नंबर, आपको सीरियल नंबर देने का है. लेट से सीरियल नंबर है 1 2 3, ये सीरियल नंबर है. कब इंस्टॉल किया है? तो ये कल इंस्टॉल होगा. परचेसिंग कब का है? आज का परचेसिंग है. स्टेटस क्या है? शिफ्ट हो चुका है, इंस्टॉल होने का है, कल जाके इंस्टॉल होने वाला है. एंड यूसेज एंड डेट, ये 2 साल के बाद में, 1 साल की वारंटी होगी तो 1 साल के बाद का यूसेज एंड डेट डाल देंगे. लेट्स से 28 ऑफ जून को ये एक्सपायर होगा इसका यूसेज, यानी इसकी वारंटी खत्म हो जाएगी. कितने क्वांटिटीज हमने बोली थी? सो देयर आर 40 क्वांटिटी. एंड व्हाट विल बी द प्राइस? 38,000 इज द प्राइस. You just save it. Now you can see the assets has been created successfully. You go to the related. Uh, in that way, you are supposed to create the assets basically. So you can see the assets is created with a name called Samsung AC for Paradise Hotel. Their serial number, their installation date, their warranty end date, all those things are available in the assets. So basically, हम इधर आते हैं तो व्हाट इज एसेट्स? एसेट्स इज अ यूनिट ऑफ प्रोडक्ट सोल्ड टू अ स्पेसिफिक अकाउंट. तो हमने ये एसी के यूनिट ऑफ प्रोडक्ट हमने सोल्ड किए हैं कितने? 40 क्वांटिटीज में. तो वी कंसिडर इट एज एन एसेट्स, दैट्स व्हाई वी एडेड इनटू द एसेट. सिमिलरली वी कैन ऐड अ मल्टीपल एसेट्स ओवर हियर. तो अभी मैंने एसीज के लिए एसेट्स बनाया. सिमिलरली आई कैन क्रिएट एसेट्स फॉर रेफ्रिजरेटर. And to do that, I need to click on new. Then once again, I need to assign a name. Let's say refrigerator. Okay, refrigerator. Let's make a correction. Paradise Hotel. Let's say asset refrigerator. The name दे दिया. For which account? Paradise
For which contact? Gopal Madhav. For which product? Now refrigerator. Serial number is something. This installation date is the day after tomorrow. Purchase date is today. ये इसके भी 1 year की वारंटी हम लोग दे रहे हैं. So this 22nd. Let's have a quantity of 25 with a total price of 22,000 rupees. Let's save this. Now you can see there are two assets which is belongs to the Paradise Hotel, right? So ये हो चुका है हमारा assets create. अब देखो हमने क्या किया, मैं थोड़ा सा आपको फ्लो बता देता हूँ ताकि आपको समझ में आए कि एग्जैक्टली व्हाट वी डिड, राइट? सो गो टू, एक्चुअली पेंट में मैं आपको समझा दूंगा कि एग्जैक्टली हमने क्या किया है. सो बेसिकली we have a company with a name called Samsung, right? So we have this company with the name Samsung. Then that Samsung company run the campaign. Okay. And then that campaign gives me a lead, right? So basically, it gives me a lead. So particular campaign gives me a lead. फिर lead now converted into three things. Okay. So पहला क्या था? It converted into account, which is nothing but the name of your company. And then it is now converted into contact also. And then it is now also converted into opportunity. Right. So these three things, lead is now converted. पहले account, फिर contact, opportunity. तीन चीजों में convert हुआ है. Then we need to estimate the opportunity, and to estimate the opportunity, we use a product list. मतलब हमने product add किया, and that wait a minute, we add a product into this opportunity. So we add a product. We also add a price list and add that product into the price list. So हमने क्या किया, प्राइस बुक ऐड किया, प्राइस बुक के अंदर ये सारे के सारे प्रोडक्ट ऐड किए, एंड बेस्ड ऑन दैट दिस अपॉर्चुनिटी इज गोइंग टू बी कैलकुलेटेड, एंड देन we create a quote, right? So we create a quote, and once we create a quote for this particular opportunity, right, we send this quote to these two things, है ना? ये इसके लिए भेजा, किसको किसको भेजा? हमने भेजा अकाउंट एंड कॉन्टैक्ट को ये कोटेशन भेजा. If these two person is agree with this quotation, then these two person now comes into the agreement called contract, and then they gives us an order. और फिर हमने क्या किया, हमने assets तैयार किए, राइट? तो ये फ्लो समझा. सैमसंग रन द कैंपेन. ओके, यहाँ पे कौन से कैंपेन रन किए हम लोगों ने? वी रन द टीवी एड, and then we run hoarding campaign. So we run two campaigns. Then we got a lead. From where we got a lead? We got a lead from Paradise Hotel. Right, we got a lead from Paradise Hotel. And then that Paradise Hotel is now converted into account. So basically account is Paradise Hotel. And who is your contact? Contact is your Gopal, is the manager जो हमारा contact person करके act हुआ है. And then we create opportunity for these two and calculate the estimated cost. We use a product, then we add a price book. On the basis of that, opportunity cost will be estimated,
and then we create a code for this opportunity. So we create the code for this opportunity, and that code is now being sent. किसको भेजा हम लोगों ने? ये भेजा हमने इस कॉन्टेक्ट को और इस अकाउंट को, राइट? एंड देन दे एग्री विद दिस कोड, और फिर एग्री करने के बाद में हमने कॉन्ट्रैक्ट क्रिएट किया, ऑर्डर किए, सेट किए और एसेट्स क्रिएट किए, राइट? अब इसके आगे क्या करेंगे हम लोग? ये हो गया हमारा कंप्लीट सिनेरियो रिलेवेंट विद द मार्केटिंग एप्लीकेशन एज वेल एज सेल्स एप्लीकेशन। ओके, तो ये इतना पोर्शन किसका था? मार्केटिंग और सेल्स का था। अभी आगे क्या होगा? अभी आगे सर्विस एप्लीकेशन कम्स टू एन एक्शन। उधर हम लोग क्या करेंगे? वंस यू डिलीवर द प्रोडक्ट, फिर प्रोडक्ट में कुछ प्रॉब्लम आ सकता है, इंस्टॉलेशन में प्रॉब्लम आ सकता है, कुछ भी हो सकता है, तो हम लोग उससे रिलेवेंट सर्विस प्रोवाइड करेंगे। एंड फिर वो सर्विस से रिलेवेंट किस तरह से हम चीजें मेंटेन करते हैं इनटू द सेल्सफोर्स सीआरएम, वो हम लोग कर देंगे। सो आई होप यू विल अंडरस्टैंड दिस सिनेरियो which is relevant with this सैमसंग कंपनी, राइट? तो ये हम लोगों ने सिनेरियो क्रिएट किया फॉर द सैमसंग, एंड द मेजर participant is Paradise Hotel, who done a business with this Samsung company. तो ये सिनेरियो अभी तक के समझा होगा आप लोगों को। कॉन्ट्रैक्ट हो गया, ऑर्डर हो गया, एसेट्स हो गया, नाउ हम लोग सर्विस प्रोवाइड करेंगे। सो फ्रॉम टुडे, टुमारो ऑनवर्ड्स वी आर गोइंग टू डील विद द सर्विस एंड फ्यू मोर ऑब्जेक्ट्स। तो अभी अभी हम लोगों ने कितने ऑब्जेक्ट्स के बारे में डिस्कस किया? सो कैंपेन, लीड, अकाउंट, कॉन्टैक्ट, अपॉर्चुनिटी, सो दीज आर द 5 ऑब्जेक्ट। Then we discuss about product and price group, that is 7. Then quote is 8. Then contract, order and assess 9, 8, 9 and 10. So we basically discuss about the 10 objects, और अभी और 7-8 objects हम लोगों को पढ़ना बाकी है, right? So with this I am concluding